the farmers of Sindh, Punjab, the agriculturalists from Pakhtunkhwa, Balochistan. This tragedy, this disaster, took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income is devastated, nowhere to go. Aur hamara sab is mushkil ghadi mein, at the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres, जो उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीज़ों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. और मैं समझता हूँ कि हमारा यूनिटी गवर्नमेंट का इस वक्त तक सबसे बड़ा कामयाबी, हमारा खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा कामयाबी, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अपना एक बहुत बड़ा कामयाबी ये है कि इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज़्यादा हमें प्लेज किया गया. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United General's Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. हमारा जो मुतालबा था, हमारा जो आस था, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges,
that if we work, ज़राअत को मदद करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीमी इदारे को, सेहत के इदारे को खड़ा करना पड़ेगा। मगर उन दिनों में जब सैलाब का सिलसिला चल रहा था और मैं कभी UN सेक्रेटरी जनरल के साथ, तो कभी वज़ीर आज़म के साथ, तो कभी मुल्क के मुख्तलिफ बैरून मुल्क के मुख्तलिफ सफ़ीरों के साथ सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए रिलीफ के सिलसिले में अपने दौरे में था, जिससे मैंने मिला, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या जहाँ से हो, उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें। और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। और ये शुरुआत है, this is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. ये इस प्रोग्राम का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो नज़रिया है, रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा मिलता जुलता है। और मैं समझता हूँ एक नया नस्ल का इसी सफ़र में, इसी मंशूर की अमल में हम अपना अब कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट से हमने एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक से, और मैं यहाँ सबके सामने वर्ल्ड बैंक का शुक्र अदा करना चाहूँगा और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है नाजी साहब का शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि सफ़े अव्वल का किरदार नाजी साहब का रहा है, जिन्होंने बारिशों के दौरान, मानसून्स के दौरान मेरा और CM साहब के साथ मीटिंग किया था। हमने तफसीली ना सिर्फ रिलीफ का बात किया था, और उन दिनों में हमारा बहुत ज़ोर रिलीफ पे था, और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने, मुख्तलिफ इदारों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद तो किया, लेकिन जो बात हमने उस वक्त से उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, वो ये था कि हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है, और इसमें आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। और बाकी सारे प्लेजेस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी सारे वादे, बाकी सारे लोन्स जनीवा में ऐलान हुए, मगर उससे पहले नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का लोन का अप्रूवल दिलवाया। और जब मैं जनीवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था, तो जेब में उसी वक्त में $2 अरब का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से हमारे हाथ में था। और उस $2 बिलियन के लिए CM साहब ने पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोजेक्ट्स का तैयारी कर चुका था, और उन प्रोजेक्ट्स में से, और इसलिए वो इतना जल्दी अप्रूव हुआ, और उसमें से $500 मिलियन का जो रकम है, वो हमारा ये हाउसिंग इनिशिएटिव का, पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के लिए है। सिंध, एक तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अब दूसरे इदारे भी आगे आ रहे हैं इस सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव को फंड करने के लिए। पूरा सिंध का जो अगर हमने ये जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है, तो हमें $1.5 बिलियन का ज़रूरत है। उसमें से अभी तक घरों को नुकसान को सही करने के लिए, तामीर नौ करने के लिए $1.5 बिलियन का इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग का ज़रूरत होगा। अभी तक हमने 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक का उस 1.5 बिलियन से 500 मिलियन सीधा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा।
साथ साथ हुकूमत सिंध ने $250 मिलियन जो है अपना बजट से इस मंसूबा में शामिल करने के लिए वादा किया है, और वज़ीर आज़म साहब ने सीएम साहब को यकीन दिलानी दिया है कि वो वफाक की तरफ से भी जो सिंध गवर्नमेंट का फंड्स है 250 मिलियन उसको मैच करेगा, और बाकी जो रहता है इंशाअल्लाह ताला वो भी हम जमा करेंगे। और इस पैसा के साथ हम ना सिर्फ जिन लोगों का घर को नुकसान हुआ या बिल्कुल ही तबाह हुआ उसको एक बार फिर बनाएंगे, मगर हम चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ इनको घर बना के दें मगर सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक भी दे दें। और मैं समझता हूं कि ये एक टेस्ट केस है, एक शुरुआत है, और अगर हम इस सिलसिला में कामयाब होते हैं तो ये हमारा नस्ल का हमारा जनरेशन का लैंड रिफॉर्म्स का सिलसिला होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का जो खूबी है वो ये है कि आप मुतासरीन का तो घर बना रहे हो, मगर अगर बनाने के साथ साथ हम उनको मालिकाना हकूक दें, और मेरा तो मुतालबा होगा सीएम साहब से कि वो मालिकाना हकूक जो है वो घर के औरत को दिया जाए। तो अगर हम इनको मालिकाना हकूक देंगे तो हम ना सिर्फ इनके घर का तामीर नौ में मदद कर रहे हैं जो उनका हक है, वो तो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ, मगर हम उनको एक एहसासे दे रहे हैं। रातों रात इनके जो इनकम है, जो वेल्थ डिस्पैरिटी है, जो अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप है, अब रातों रात उसमें एक बड़ा अंदाज से फर्क डाल रहे हो। और अब इस खानदान के पास जब ये एहसासा होगा, उनका अपना जमीन, अपना नाम होगा, तो फिर उसका वो चाहे कि उसी वक्त वो बेचे और उसी वक्त को फौरन उनको एक रकम मिले, या मेरा ख्याल में ज़्यादा लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वो इस आशा को अगर वो आप पास रखें आगे वाली नस्लें के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अगर वो आगे जाके फैसला करें तो उनके पास हमेशा के लिए एक ऐसा एहसासा हो। लेकिन मेरा ख्याल में कोई नहीं बैठेगा, ना जिनको आप दे रहे हैं, ना उनके आने वाले नस्लें इसको बेचेंगे। ये इसको एक एसेट के तौर पे ट्रीट कर सकेंगे, एंड इट विल गिव देम एक्सेस टू कैपिटल। वो अपना फिर इस असासा के नाम पे कर्ज ले सकेंगे। उस कर्ज को अगर वो इस्तेमाल करना चाहे अपने पूरा घर को सही बनाने के लिए तो वो उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस असासा के साथ कर्ज लेके वो ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहे और अपना ज़राए पैदावार में इजाफा करना चाहे तो वो भी उनके लिए एक ऑप्शन आ जाता है। अगर उन्होंने कोई और कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए भी एक असासा है जिसके साथ वो कर्ज लेके कारोबार कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम ना सिर्फ वो गैप को कम कर रहे हैं, गरीब को, आम आदमी को वसाइल दे के उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं, मगर पूरा मईशत पे इसका असर होगा। जब हम पैसा देंगे या वो कर्ज या लोन सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए या ये असासा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे गरीब तरीन लोग हैं उनके पास वो पैसा आएगा और वो पैसा आपका मईशत में चलना शुरू कर देगा। अगर एक गांव में, एक देही इलाकों में वहाँ का जो मकामी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। इस सिलसिला से ना सिर्फ उस घर को मदद दिया जाएगा, उस गांव को मदद दिया जाएगा, पूरा सूबा का मईशत को और फिर उसका एसोसिएशन से पूरा मुल्क का मईशत का एक किस्म का
فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے, ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں, اور میرا امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا, مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو, جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو, جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو, جو ریاست کا کوئی کام کا نہ رہا ہو, جہاں پاکستان کے عوام اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے, نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے, مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو, غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں, میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے, آپ نے انشور کرنا ہے, آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے, جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا, اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں, لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر, آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے, تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے, ہم آپ کے پاس پہنچیں گے, مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میرے خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے. ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤسنگ کا انیشیٹو کا ہوگا, مگر ہم ایگریکلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے, آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے. تعلیمی ادارے کو, صحت کے منصوبے کے, غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہو کہ جیسے ایس آر ایس او کا کام چل رہا ہے, میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہے, اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں. مگر میں پورا پاکستان کو, اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے, ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ, بہت ہی بڑا کامیابی, پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے. لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں. گھر بن بھی رہے ہو, یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو, جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنے تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو. یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے, زراعت کے لیے ایک زراعت کا بھی بحران, معاشی بحران, لیکن ایک صحت کا بحران, تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے, جہاں بھی آپ دیکھیں کرائسس ہے.
और उस बोझ वो मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद को समझाएं, लेकिन पूरी दुनिया के समझाएं कि जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. आप सोचिए कि हीट वेव और ड्राउट की वजह से एक फसल को नुकसान, फिर मॉनसून और सैलाब की वजह से दूसरी फसल को नुकसान, और तीसरी फसल के लिए जितना कोशिशें किए गए और जहां से पानी निकाला गया सो निकाला गया, लेकिन काफ़ी इलाकों के लिए तीसरा फसल को भी नुकसान, या पानी नहीं निकल सका, या अगर पानी निकल भी गया वो ज़मीन सही तरीके से टाइमली आबाद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये ये एक फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, ना सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है। ये पहली दफ़ा मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोजगारी, दिस इज अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिजास्टर तो फ्लड था, but the humanitarian crisis, the three crops: first crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water, and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly, but there is a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agriculture economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. सिर्फ सूबा सिंध का अगर आप देख लें तो कि कुदरती आफत के साथ साथ ज़राअत का बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान के साथ साथ कहत साजी का खतरा के साथ साथ एक तालीमी बहरान भी है कि 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged.
And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We prided ourselves, as far as our health infrastructure's improvement is concerned, in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें, तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल ना सिंध के अवाम ने पहले ही गुजरे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं. मैं दूसरों की बात अगर नहीं कर सकता मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है. और ये मेरा ज़िम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह. सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें. और ये ज़िम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए. मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face,
And they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID, and one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है। जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज़, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़रात को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो, वहाँ के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज़ की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहाँ कुदरती आफत का असर आया हो, उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज़ देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है। What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted. What we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, there should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous.
جو ہمارے سامنے امتحان ہے، جو مشکلات ہے، وہ میرا خیال میں تاریخی سطح پہ اس قسم کا بحران سے ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن حل ہمارے پاس ہے، منصوبے ہمارے پاس ہیں، آدھا جو اس کا فنڈنگ ہے اس کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزیر اعلیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیے ہیں اور سب سے آگے فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، اور ہمارا جو مطالبہ ہے وفاق سے اور آئی ایم ایف سے کہ وہ سیلاب متاثر علاقوں کے سیلاب متاثرین کا اپنے فیصلوں میں خیال رکھیں، اور ہمارا امید ہے کہ ہم پانی میں ڈوبنے کے بعد مہنگائی میں اور جو دوسرے جو معاشی مسئلے ہیں ان میں جتنے ہم مدد دے سکتے ہیں سیلاب متاثرین کو، سیلاب متاثر علاقے کو، وہ ہمارا امید ہے کہ وفاق اور انٹرنیشنل اداروں سے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گا۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیپیسٹی میں یہ جتنا یاد دلوا سکتے ہو اسلام آباد کو، لاہور کو، باقی ملک کو، دنیا کو، کہ چینلز کی جو ٹیلی ویژن کیمراز ہیں وہ تو چلے ہی گئے ہیں، امداد آنا بھی وہ سلسلہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہے ہیں، مگر مشکلات میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام چاہے وہ بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، وہ آج تک اس سیلاب کے نتیجے میں مشکل میں ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کا مدد کریں۔ سندھ حکومت کی یہ انٹرونشنز کے ساتھ ساتھ، وفاق کے مدد کے ساتھ ساتھ، دنیا کے مدد کے ساتھ ساتھ آپ سب نے اپنا ایفرٹ کو تھوڑا سا انہانس کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بزنس کمیونٹیز ہے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہے، ان کو ایک بار پھر ان کے دھیان ہمارے سیلاب متاثرین کی طرف ہمیں لے آنا پڑے گا۔ اس لیے آج بھی جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے، لیکن میں یقین بھی ساتھ ساتھ دلوانا چاہوں گا کہ منصوبہ بھی ہے، پلان بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی 1-2-3 سال کا میکسیمم اپنا میں ٹائم فریم دلوا رہا ہوں، جس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو ان کو پھر سے ایک بار بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے، جہاں جہاں سکولز ہے، ہاسپٹلز ہے جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پھر سے ایک لیول پہ لے آ سکیں گے۔ جو غربت کے منصوبے ہیں، جو زراعت کے منصوبے ہیں، ان میں اضافہ ہوگا، لیکن جو ہمارا سب سے مین پرائیورٹی ہے وہ میرے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا گھر بنانا ہے، مالکانہ حقوق دلوانا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 سال کے اندر پورا کروں گا۔ اور آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا، ورلڈ بینک کے، ہمارے سارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے جو آج یہاں موجود ہیں، جو آج نہیں آ سکے لیکن ویسے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں مسائل بہت زیادہ ہے اتنا ہی ہم محنت ڈال رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح ہو، وفاقی سطح پہ ہو، یا میں بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے۔ Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you.
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ترقی یافتہ سندھ عہد سے تعمیر نو تک کے عنوان سے منعقدہ تقریب جو کہ سندھ حکومت اور اقوام متحدہ کے تعاون سے یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. جو ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں اس کے تناظر میں اس کے فالو اپ کے طور پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ